अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत सॉरी कि स्टार्ट में कैमरे का एंगल थोड़ा सा गलत है। आगे जाके उसके अंदर हम चॉपिंग करेंगे और अपने बाल
इसको जब कोई कपड़ा ऊपर बिछा के इसको जब आयरन करते हैं तो ये बिल्कुल नीट क्लीन हो जाती हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं और स्टीक में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और उसके अलावा ये हमारे होम डेकोर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, तो इसलिए इनको वेस्ट ना करें, ये आपके बहुत काम आएंगी क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है ये फॉइल जो है, तो इसको वेस्ट करने का कोई जवाब नहीं बनता कि हम इसको वेस्ट कर दें। अच्छा देखें, इसी तरह से अभी हमने नेक्स्ट एक पीस स्लाइस से निकाला है और उसको हम नीचे रख के और उसके अगले स्लाइस पे तो दोनों तरफ ये तकरीबन 21 फॉइल्स हमारी लगेंगी इतने बालों की ग्रोथ में, तो बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बीच में चेक कर लेते हैं खोल के, अभी नहीं चेक करना, ज़रा पहले बॉक्स सेक्शन पे लगा दो, उसके बाद फिर हम बैक से लगाना शुरू करते हैं क्योंकि लगाते लगाते हमारे पास हमारा काफ़ी टाइम हो गया है। तो पहले हम बॉक्स सेक्शन पे लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम बैक से चेक करना शुरू करते हैं कि हमारा कट डाउन किस लेवल तक आ गया है। बॉक्स सेक्शन पे भी लगा देते हैं और साइड से भी लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम अपना कट डाउन चेक करेंगे कि वो किस लेवल तक आ गया है। आएगा तो थोड़े टाइम से ही क्योंकि मेटेलिक हेयर हैं और इन्होंने, ये मेरे जो क्लाइंट हैं इंग्लैंड से आई हैं, इन्होंने मुझे बताया कि कुछ टाइम पहले इन्होंने करवाया था वहाँ पे, लेकिन ऑरेंज पिगमेंट आ गई थी। तो इनकी ख्वाहिश ये कि बहुत सॉफ्ट
पहुंच चुका है, लेकिन हल्का सा इसमें ऑरेंज पिगमेंट है। उस ऑरेंज पिगमेंट को हम क्या करेंगे, जब हम वॉश हो गई हैं, तो हमारी क्लाइंट्स को तो बहुत पसंद आई हैं, वो यही चाह रही थी। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और टेक्निक कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप किस मौजू पे देखना चाहते हैं वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। उम्मीद है कि आपकी मदद से मज़ीद सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।